Hello dear students, I would like to welcome all of you in the class of English. As we all know that we are studying nowadays chapter number 5, The Happy Prince, written by Oscar Wilde. Dear students, till now we have attended page number 29 and 20 and 29. In these pages we have come to know that we meet a happy prince whose statue has already been placed in the middle of the town on a column, and one bird named Swallow, who was just trying to go to the Egypt for meeting his friends. Actually, he was being awaited over there, but just he tries to have a rest, and he finds a suitable place of the happy prince and he tries to get down on his feet and tries to take a rest. But sometimes what happens, he finds that the happy prince was weeping. He asks for the reason and was mentioned and explained by the happy prince that he was a happy prince in a very short span of life he died, and he just only can see the misery and ugliness of the town. So just he wants to make a favor by a swallow. So just he tells something to be done. So dear students, we would like to discuss over here in page number 30 and 31 what is told by the happy prince and how the swallow helps the happy prince. So dear friends, let's start the story. I am awaited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. So dear friends, it is told by the swallow he is being waited in Egypt, and his friends were flying here and there in Nile river and playing with lotus flowers. We're talking, and very soon they are going to sleep. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. उसने क्या कहा कि मतलब कि एक रात के लिए आप स्टे कर जाओ, क्योंकि जो लड़का काफी प्यासा है और माँ जो है काफी दुखी है. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt. उसने क्या कहा कि मैं लगता बच्चों को पसंद नहीं करता, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but he agreed to stay with him for one night and be his messenger. So what happens? His appearance, the happy prince's appearance was so sorry that the swallow was agreed to stay there for one night in spite of being cold condition. Thank you, little swallow, said the prince. The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. So what happens, students? We can see कि जो swallow के द्वारा जो ग्रेट रूबी होता है वो प्रिंस के स्वॉर्ड के हिल्ट से निकाला जाता है और वो अपने बीक में लिए और टाउन के छत से उड़ता चला जाता है. He passed by the cathedral tower where the white marbles angels were sculptures. जैसे ही वो बड़ी गिरजाघर के टावर से गुजरता है, देखता क्या है कि सफ़ेद संगमरमर जो होते हैं उसमें जो सफ़ेद संगमरमर के जो एंजल्स और देवदूत होते हैं वो उनकी मूर्तियां बनी होती है वहाँ पर. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. So what happens? What does he see? He just heard the sound of dancing. A girl was dancing with her friend. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. She was saying that while dancing that she has ordered the flowers to be embroidered, but she is blaming on the seamstress to be a lazy guy. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. वो नदी के ऊपर से उड़ता है और देखा क्या कि जो लैंटर्न जो लालटेन होता है वो शिप के मास्ट जो मस्तूल होता है उसके ऊपर लटकाया होता है. At last he came to the poor woman's house and looked in. आखिरकार वो आ जाता है गरीब उस औरत के घर पर और अंदर देखता है. The boy was tossing feverishly
on his bed and the mother had fallen asleep. जो लड़का होता है वो बुखार में बिस्तर पर उछलता रहता है, टॉस करता रहता है, और जो माँ होती है वो सो चुकी होती है. She was so tired, वो इतनी थक चुकी होती है इस कारण से. In he hopped and laid the great ruby on the table beside the women's thimble. क्या कहता है, अंदर वो उछल करके, मतलब जो अबाबिल होता है वो हॉप करता है, अंदर चला जाता है हॉप करते हुए, और जो ग्रेट रूबी होता है उससे जो विमेन के जो थिम्बल बोलते हैं, मतलब जो कोना होता है, वन काइंड ऑफ ड्रेस दैट इज वोर्न बाय द सी मिस्ट्रेस फॉर प्रोटेक्टिंग देयर फिंगर्स. मतलब कि जो दर्जन या दर्जी के द्वारा अपनी उंगलियों की रक्षा करने के लिए सिलाई करते समय थिम्बल पहना जाता है, तो उसी के बगल में टेबल के किनारे वो रूबी रख देता है. देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड. तब वो बड़ी सुगमता के साथ बेड के चारों ओर उड़ता है. फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स. अपने पंखों से बॉय के ललाट को क्या करता है, फैन करता है. हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर. दैट मीन्स a very nice expression was made by the boy saying that he was feeling very cool and he is going to get better very soon, and he sank into a delicious slumber. That means he was going to take a sound sleep at that time because of fanning by the swallow. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. वो क्या बोलता है कि वापस जब उड़ के आता है हैप्पी प्रिंस के पास, उसने कहा जो उसने कर दिया था, और कहता क्या कि बड़ा ही क्यूरियस ये एपिसोड था, अब मैं काफ़ी वार्म फील कर रहा हूँ इन स्पाइट ऑफ बीइंग द कोल्ड वेदर. दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस. राजकुमार ने क्या कहा, ये इस नाते आप वार्म फील कर रहे हैं क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है. And the little swallow began to think and then fell asleep. और क्या होता है, तो छोटा जो swallow होता है सोचना शुरू कर देता है और सो जाता है. Thinking always made him sleepy. सोचना ही उसको जो होता है हमेशा उसके sleepy बना देता है. When day broke, he flew down to the river and had a bath. जैसे ही दिन निकलता है वो उड़ के चला जाता है और कहाँ आता है, नदी में नहाने के लिए. Tonight I'd go to Egypt. क्या कहता है कि रात को मैं इजिप्ट जाऊंगा, said the swallow, and he was in high spirit at the prospect. और ये सोच करके इस आशा के बड़े हाई स्पिरिट में होता है. He visited all the monuments and sat a long time on the top of church steeple. मतलब कि सारे मॉन्यूमेंट्स को विजिट करता है और चर्च के स्टीपल पर क्या काफी लंबे समय तक वो बैठा होता है. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. क्या आपके लिए कोई कमीशन है इजिप्ट का? उसने चिल्लाया और कहा कि मैं अब जा रहा हूँ इजिप्ट. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? I am awaited for in Egypt, answered the swallow. क्या कहता है कि एक काम और, एक रात क्या और रुक सकते हो मेरे लिए, ये पूछा गया प्रिंस के द्वारा स्वैलो से. लेकिन स्वैलो क्या जवाब देता है कि मेरी प्रतीक्षा हो रही है इजिप्ट में. सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव अटेंडेड टिल पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 31. ऑल्सो वी हैव कम टू नो दैट सम ऑर्डर्स वर मेड बाय हैप्पी प्रिंस एंड वाज फॉलोड बाय द स्वैलो. डियर स्टूडेंट्स, the remaining parts will be attended in the next video. So you will have to answer question number 1 and 2 of this lesson, and the remaining parts will be attended in the next video. So meet you next video. Bye.